Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got a bunch of topics to discuss, but before starting, I just want to convey a message that if you want to have all our notifications of our upcoming courses, offers and programs, and also to get some of the free study materials, you all are requested to join our free WhatsApp group, which is in the link given below. So do join our WhatsApp group and also our Telegram channel for the latest updates. So now let's start. Okay. The first is about the direct tax receive cross half the targets. So it basically says about the taxation reforms in India. Okay. So what is the context associated with this topic? We can see that India's net direct tax collections till October 8 in the financial year of 22-23 have risen to 7.45 lakh crore, more than half of the budget targets. तो यहाँ पे जो की डिटेल्स दिया गया है, तो यहाँ पे की डिटेल्स क्या क्या दिया गया है? इट सेज अबाउट द फाइनेंशियल ईयर, जो मैंने अभी भी बोला 7.545 लाख करोड़ हो गया है. इंक्रीज बोला गया है 16.3% का. नेट पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन इतना ग्रू होगा है. एंड देन वी कैन सी अबाउट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन बीइंग 16.29. इसके बाद सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में बोला गया है, विच इज मोर मॉडरेट अराउंड 16.25, और ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रीच अराउंड 8.98 लाख करोड़ बाय सैटरडे. तो यहाँ पे जो डाटास दिया गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राइज इन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस. देखो, if I go forward with the first thing about the first significance of this direct tax collection, we could see that, see, tax collection is an indicator of economic activity in a country. अगर टैक्स हम लोग का जमा नहीं होगा, then obviously the economical progress will not be there. तो टैक्स कलेक्शन क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है. दिस इज डायरेक्टली अ लिटमस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एनी कंट्री. Supposedly, if I say about a country like India, which have got a robust tax collection, despite slowdown in industrial production and exports, we have witnessed a robust tax collection system. Because we could see that the rise in deficit direct tax collection can be attributed to some of the tightened enforcements and compliance which uses technology, including the use of even the annual information system. Because this annual information system, which is required for directly tax collections, is providing a comprehensive information to the taxpayers on their financial transactions. And the purpose of this AIS is to make it easier for taxpayers to file their returns. So now if I say about this direct taxes like income tax, wealth tax, etc., these are based on the principles of ability to pay. And so the equity or justice is the allocation of tax burden in a well secured by these taxes. And therefore we could know about that this direct taxation is what? It's very much progressive in nature, because the direct taxes can be designed with fine gradations and progressiveness, which serve as an important fiscal weapon, reducing the gap between inequalities in income as well as wealth. And what is this direct taxes today? What we are going for? That is the income tax, wealth tax. ये ऑब्जेक्टिव क्या है इन लोग का? दिस लीड्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इक्वालिटी. अगर डायरेक्ट टैक्स देते हैं लोग, जैसे वेल्थ टैक्स बोला, इनकम टैक्स बोला, इट एनहांसेस द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, एंड दिस इक्वालिटी इज बेसिकली लिंक्ड टू द सोशल इक्वालिटी. So therefore, यहाँ पे बोला गया है कि like the various efforts that were put down by the tax administration on direct as well as indirect taxes to nudge some of the higher compliance with these reforms, we could see that better tax collections अभी अभी हुआ है, and यहाँ पे less momentum हुआ है किस चीज का? डायरेक्ट टैक्सेस लॉस का. तो यहाँ पे और एक चीज तुम लोग पूछ सकते हो कि सर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स बेसिकली. तो यहाँ पे मैं एक बोल देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द एंटिटी that imposes it. Supposedly, an individual taxpayer, for example, pays direct taxes to the government for various purposes, including मैंने बोला था income tax, real property tax, personal property tax. तो ये होता है क्या? डायरेक्ट टैक्सेस. और डायरेक्ट टैक्सेस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? मैंने बोला था सोशल इक्वालिटी, प्रोग्रेसिव, बिकॉज मैंने बोला था क्या? ये फिजिकल वेपन है विच डायरेक्टली रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. ये प्रोडक्टिव होता है. Productive कैसे? Because direct taxes are very much elastic in nature, because revenue from direct taxes increases or decreases automatically with the change in the income level. Certainty है,
because compared to the indirect taxes, direct taxes are more exact and precise. तो इसीलिए क्या है, certainty है. Also we could see about the economy that is well maintained under direct taxations, which is collected annually in lump sum amount. ठीक है. उसके बाद direct taxes have an educative value as they create a civic sense amongst the taxpayers. Anti-inflammatory, because direct taxes can serve as a good instrument of anti-inflationary fiscal policy, because the excessive purchasing power during inflation can be mopped up from the community through increased direct taxes. So therefore, today the government is directly focusing much more to improve the direct taxes, be it through various number of even the schemes. एक स्कीम है, ये बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है, विवाद से विश्वास. ओके, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, विवाद से विश्वास. That means this will benefit the government by generating timely revenue and to the taxpayers by bringing down mounting litigation cost. तो विवाद से विश्वास स्कीम, तो पहले गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करो, विवाद मत करो. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, that is the direct taxes. So today, what are the different types of direct taxes? Today we have got different types of taxes we have got, not the direct taxes. We could see about that is the corporation tax. ओके, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, जो मैंने यहाँ पे बोला था. तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है? इट्स अ डायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. तो ये होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स. ठीक है, तो ये सब हम लोग का अभी बढ़ा है, एंड इसी के लिए हम लोग का क्या हुआ है, जो फायदा हुआ है, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर हैव राइजन, इतना हम लोग का बढ़ा है. दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द बजट टारगेट. बजट ने जितना टारगेट किया था उससे ज्यादा हम लोग का टैक्स आ रहा है. That means we have got a robust taxation of direct taxes that we have today in our country. Okay, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. Fatalities among UN peacekeeping. तो यहाँ पे बोला गया है about the fatalities that today we could see about the UN peacekeeping force which are destined in the areas where some number of disorder or disharmony is present. So today, if I talked about this UN, so the number of fatalities among the UN peacekeeping force is the direct attacks is growing, said UN Under Secretary General Jean Pierre Lacroix. तो यहाँ पे इन्होंने क्यों बोला है, देखो पहले हम लोग देखते हैं अबाउट द यूएन पीस कीपिंग फैटलिटीज ड्यू टू मैलिशियस एक्ट. ओके, मैलिशियस एक्ट कौन से बोलते हैं, विच आर नॉट इलनेस और एक्सीडेंट्स, एंड दे हैव राइज्ड from 13 in 2020 to 25 in 2021, and this year as many as 26 till August. तो ये क्या है, मैलिशियस एक्ट्स. तो recent attacks on the United Nations peacekeepers in the Democratic Republic of Congo amid anti-UN protest has left 2 border security forces jawans dead. And till that, we can see that India has lost around 179 peacekeepers over the past 60 years. पास्ट 60 years में देखो तो 179 लोग यहाँ पे मरे हैं, लेकिन अभी अभी डीआरसी में 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं वहां पे. So the issue of growing fatalities and the lack of clear mandates for the blue helmets were at the top of the agenda as UN peacekeeping chief, that is Lacroix, held a meeting in Delhi recently as a part of the tour to India, Pakistan, UAE and Japan. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये सब इश्यूज के बारे में यहाँ पे रेज किया बात को. And he opined that soldiers need a more robust or proactive mandate, better equipment to deal with deteriorating conditions in countries where these forces are directly placed upon. So today, what is the reasons behind sudden increase in UN peacekeeping facilities? देखो, these peacekeepers जो जाते हैं in areas में, तो they serve in various harsh conditions and at great personal risks. ठीक है, तो मैं इंडिया का मैंने यहाँ पे बोला था अबाउट 179, लेकिन मैं अगर पूरा वर्ल्ड का देखूं जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाता है, आज तक कम से कम 2400 लोग 2400 peacekeepers have died while serving in these UN operations. And majority of the UN peacekeeping operations are in an environment that is deteriorating both from the point of view of the political environment and also the security environment. And the peacekeeping environments now features armed groups, terrorists, organized crime, street gangs, criminal and political exploitations, and various other threats. And this complex threats is directly posing some of the greater fatalities to our UN peacekeeping forces. So therefore, we need to have a proper regulations to go forward with these peacekeeping forces. Okay, so therefore, India has done various number of peacekeeping missions, be it the UN peacekeeping operations, where we can see that today India has around
5,500 troops and police from India who have been deployed to the UN peacekeeping missions. And today we are directly the fifth highest amongst troop contributing countries. In 2007, we were amongst the first country to deploy the all women contingent to a UN peacekeeping mission. So today, all such number of threats, that is the contemporary threats, this uh, UN peacekeeping forces are directly facing, this could be tackled through some number of contemporary ideas also. यहाँ पे पहला बात बोला गया है अबाउट ऑपरेशनली प्रूवन कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेबल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे फोकस करने का बात बोला है. ऑब्वियसली वी नीड अ साउंड इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस फॉर्मेशन. Also, we need to focus much more towards technological improvements. And lastly, we should give proper attention and investment in consistent training and capacity buildings of the peace speakers in the realm of technology. तो ये सब अगर हम लोग करेंगे देन ऑब्वियसली वी कुड हेल्प दिस आउट. देखो ये बांग्लादेश वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं इन लोग को. तो ऐसे हम लोग 2007 में हम लोग का पहला वुमेन कंटिंजेंट गए थे यहाँ पे. So today we are the fifth largest, which are directly contributing towards the UN peacekeeping force. So we need to have some of the complex attitudes, we need to have some of the complex provisions so that we could directly tackle the menace of these facilities well in these areas which are war torn. Okay, so ये था about the UN peacekeeping force where we have seen the 2 BSF jawans died on the line of duty. Okay, चलो next पे आते हैं. Technology is path for the very. ओके तो यहाँ पे वी कुड सी अबाउट द नोमैडिक कम्युनिटीज के बारे में बोला गया है जेएनके में, which have been offered smart cards and free transport to aid their biannual migrations. Okay, so it basically says about whom? It basically says about the Gujars as well as the Bakarwals. Okay, community. So we could see about this Gujars as well as Bakarwals. अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो they were given the scheduled tribe status around 1991. ठीक है, सो गुज्जर्स कौन होते हैं? दे आर ट्रेडिशनली कॉल्ड एज गोजर, गुजर और गुजारा, 3 नाम है इन लोग का. तो हम लोग तो जानते हैं गुज्जर्स बोल के, लेकिन इन लोग का 3 नाम है, एक है गोजर, एक है गुजार, एक है गुजारा. ठीक है, एंड दे हैव देयर ओन डायलॉग व्हिच इज नोन एज गोजरी. इन लोग का डायलेक्ट है, इन लोग जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज में यूज करते हैं, दैट इज गोजरी, which is also a branch of the Indo-Aryan dialect and have their own particular customs, workmanship and specialty. ठीक है, तो ये इन लोग का क्या है? डायलेक्ट है, दैट इज गोजरी. और अगर मैं यहाँ पे अगर बकरवाल्स के बारे में बोलूं तो बकरवाल्स क्या है? द टर्म बकरवाल्स derive from the combination of 2 terms. Bakri means goat or sheep, okay, and wal meanings who take care of the essentially the name which is implied with bakarwal. So bakri or it directly means goat or sheep, और war क्या है? wal है meaning one who takes care of this bakris or sheep. तो इसीलिए ये लोग बोलते हैं बकरवाल्स. एंड दिस बकरवाल्स हैज गॉट, ये बकरवाल्स ही है जो हम लोग को खबर दिया था अबाउट ही कारगिल, जहां पे कारगिल वार हुआ था. ठीक है, तो ये लोग क्या होता है, जनरली दे गो फॉर हाई ऑल्टीट्यूड गोट्स एंड शीप हर्डर्स. तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं शिप को हर्ड करने के लिए. ठीक है, तो वहां पे वो लोग घास फूस खाते हैं. तो देयरफॉर इन लोग ने पहली बार देखा था अबाउट द people who is directly migrating from the other side, crossing the line of LOC. They have come towards this post of the Indian country, of this Indian country. तो यहाँ पे आए थे वो लोग. तो ये लोग पहले थे जो आर्मी को रिपोर्ट किए थे about such number of movements, that is the Bakarwals. So today you could see that Bakarwals are primary pastorally nomads, rearing goats and sheep in high altitudes of Great Himalayas during summers and spend their winters in plains and foothills of the Shivaliks. तो ये क्या होता है? Nomadic herds होते हैं. ठीक है, तो if I see about this community, this Gujars and Bakarwals are the third largest ethnic group of JNK, which constitute for more than around 9% of the total population of the Union Territory. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, सो अराउंड 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गुज्जर एंड बकरवाल्स इन JNK फॉलो इस्लाम. तो ये लोग इस्लाम फेट को फॉलो करते हैं. ठीक है, लेकिन टुडे इफ यू सी अबाउट द होल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये लोग कितने लोग हैं? 9% लोग हैं. ठीक है, 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK हैज गॉट द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात एज वेल एज बकरवाल्स. तो यहाँ पे इन लोग का बारे में क्या बोला गया है? दे हैव गॉट वेरियस नंबर ऑफ चैलेंजेस. ठीक है, बिकॉज द गुज्जर बकरवाल ट्राइब इन JNK इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल द ट्राइब्स. And most habitation areas of Gujjar Bakalwas tribe in Jammu and Kashmir are lacking some of the facilities like road communication, electricity, water supplies. तो ये सब इन लोग का बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो टुडे इफ यू सी अबाउट देयर माइग्रेशन,
they undertake a biannual migration with their flock between the pastures of Kashmir and Ladakh during summers and the plains of Jammu in winters. And historically, they have been known for their immense knowledge for the ecosystem that they traverse. And across their migratory routes, their daily activities benefit the environment as they conserve local soil and water, seasonally maintain the grasslands, regulate the frequency of forest fires by limiting excessive growth, and keep invasive plant species in check by weeding them out. तो ये इन लोग का क्या है, माइग्रेशन का एक बहुत फायदा है जो कि हम लोग को डायरेक्टली मिलता है. ठीक है, तो आज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा है इन लोग के साथ. So for the upliftment of these people, the government came out with various number of employment schemes. Supposedly today you see about the Jawaharlal Rozgar Yojana, okay, Prime Minister Awaj Yojana. Then self-employment for educated unemployed youth, programs of execution of lift irrigation. तो ये सब बहुत ज्यादा स्कीम्स इन लोग को मिला है जिसके लिए थोड़ा बहुत आजकल इन लोग का थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. Because for centuries today we know that the Jammu and Kashmir's nomadic community, which is Gujrats and Bakarwals, undertake arduous journeys on foot as a part of their seasonal migration to find better pastures for their livestock. तो ये लोग बहुत ज्यादा यहाँ से उधर यूज करते हैं. तो आज यहाँ पे बोला गया है अबाउट गिविंग देम स्मार्ट कार्ड्स एंड फ्री ट्रांसपोर्ट एड फॉर देयर बायएनुअल माइग्रेशन. तो ये जो स्मार्ट कार्ड्स है, इट विल रिप्लेस द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल परमिशंस एंड ऑफर देम अ यूनिफाइड सेंट्रल डाटाबेस to all the organization and agencies for smooth and hassle-free movement of families during their migration. And this embedded with chip, the smart card contains demographic details, transit routes, originating place, destination, and all other vital statistics. So today, our pilot project will cover around 10,000 families over the next 3 months. And through this, the Tribal Affairs Department also collaborated with the Forest Department and the Census Operation Department is to provide such number of smart cards so as to make their livelihood very much of easier in these remote areas. Okay, because we know that they have not got any form of technology, and अगर इन लोग के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी लगा दे, then we could better use their respective elements for the progress of this economy. ठीक है, तो ये इन लोग के ऊपर बोला गया है कि कैसे हम लोग इनको स्मार्ट कार्ड्स देंगे फॉर creating a central database so that we could directly have a proper analysis as well as a proper record of their migration from one place to the other, basically of these two tribes, that is Gujjars as well as Bakarwals. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. आई डोनेशंस. ये डोनेशंस के ऊपर बात है, ऑर्गन डोनेशंस के ऊपर बात है, लेकिन यहाँ पे डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स इन फैसिलिटीज फॉर आई डोनेशंस. तो यहाँ पे वी नो अबाउट दिस ऑर्गन डोनेशंस बिकॉज टुडे वी नो अबाउट that this organ donations is a very important phenomena which makes an important asset after a person is directly dying. See, today we know about the organ donations, about altruistic donations, about the things which needs to be donated. Supposedly मैं बता देता हूँ कि which organs can be donated. देखो, तुम लोग वेन्स को डोनेट कर सकते हो, पेंक्रियास को डोनेट कर सकते हो, इंटेस्टाइन्स को डोनेट कर सकते हो, बोन्स को डोनेट कर सकते हो, स्किन को डोनेट कर सकते हो, लंग्स को डोनेट कर सकते हो, लीवर को सकते हो, हार्ट को सकते हो, किडनी को सकते हो और आईज को सकते हो. So one donor can save up to 8 lives by donating organs and up to 50 by donating tissues. ये याद रखना, ठीक है. तो आज टुडे इफ आई सी अबाउट द परसेंटेज, एक आई को 90%, 99% ऑफ द आईज कैन बी डोनेटेड. लेकिन इसी के हिसाब से मैं अगर हार्ट को बोलूं तो हार्ट का कितना डोनेशन मिलता है, 86% कैन ओनली बी डोनेटेड. लिवर का 68%, लंग्स का उससे भी कम 33%, ठीक है. पेंक्रियास कम 11%, इंटेस्टाइन 15%, बोन 17%, स्किन 50%, वेन्स 9%, किडनी 98%. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या कि लाइक the organs that are donated, they have got a ratio through which these organs can generate well with some of the other facilities. तो आज अगर मैं landscape of organ donations देखूं तो 80% of the people today are aware of organ donations. 67% of the people think organ donation is very much important. 35% of the people or population of this country are aware of the process. They know about this process. They don't know about the organ donations. So 80% is aware of the organ donation, but they 35% is aware of the process.
24% is definitely willing to donate the organs. Okay, and hardly around 3% people have registered to donate the organs after their respective deaths. So therefore today we could see that in this world or in this country like us, we have even got some of the altruistic donations. Altruistic donations kya hota hai? It is an act. It is basically an acting out of concern for another's well-being. People behave altruistically when they see others in desperate circumstances and feel empathy and desire to help. And it is an ethical basis for the donation of bodily material and continues to play a central role in ethical thinking in organ donations. अगर मैं यहाँ पे सपोजिटली आई हैव गॉट अ गुड आइस, मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी ही हैज टोटली नॉट फेड विद दिस आइस, उनका टोटली वो अंधकार में जी रहे लाइक, तो आउट ऑफ कंसर्न फॉर अनदर्स वेलबींग आई विल गो फॉर ऑल्ट्रिस्टिक डोनेशंस. ओके, सो देयरफॉर अभी यहाँ पे बस डाटास के हिसाब से बोला गया है कि लाइक आरटीआई डाटा शोज दैट नो कॉर्निया वाज कलेक्टेड इन सम स्टेट्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फेयर बेटर, नियरली 4.8 मिलियन आर विजुअली चैलेंज इन इंडिया. तो आज इन चारों स्टेट्स में देयर वाज नो कॉर्निया व्हिच वाज कलेक्टेड. ओके, एंड दिस डायरेक्टली हैम्पर्स द एक्सेस ऑफ some number of visually challenged in India, because through such number of areas only one can directly see the whole world if you are directly going in for donations. Okay, so there are various issues also. ऐसा नहीं है कि donations हम लोग का यहाँ पे बहुत lively है. Okay, because today India has a decimal 0.65 per million population organ donation rate, and around 5 lakh people die every year in India due to unavailability of organs. तो ये डायरेक्टली रजिस्टर कौन करता है? It directly is registered under the National Organ and Tissue Transplant Organization, that is the NOTO, NOTTO. So because of such number of activities today, we could see that a proper regulation is directly a need of the hour, which can transplant all such number of activities, all such number of organs. And इसीलिए यहाँ पे एक proper umbrella होना चाहिए, umbrella program होना चाहिए, so that all states could be encouraged to go for such number of donations. क्योंकि आज due to donations, due to less donations, we are seeing many number of people are dying just because they have not got access towards the donations given by some of the other peoples. Okay, तो यहाँ पे बोला गया about Goa, Jammu and Kashmir, some northeastern state, Andaman, Nicobar, Lakshadweep recorded zero cornea collections. यहाँ पे तो है ही नहीं. ठीक है, so topping the list of cornea collections is Karnataka, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh. तो ये directly top करते हैं. ठीक है, but we can see that nearly the total number of cornea transplants fell from itna to around itna in this period to allow 11,859 during the pandemic. तो सोच सकते हो कि आज हम लोग का जो decimal rate है, जो steps है, these were not proper, and because of this some number of constraints are directly getting faced by a lot many number of citizens of this country. तो आज hardly we could see that on an average 40 to 50% of the donated eye corneas were utilized for corneal transplantation annually. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम खाली लिमिटेड नहीं है कि लोग यहाँ पे इच्छा नहीं करते, लोग यहाँ पे देते नहीं है. दिस ऑल्सो हैज गॉट वेरियस नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. प्रॉपर सेटअप नहीं है, उसका भी एक लेकुना है. ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग का जो डिस्पैरिटीज है वो ज्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, एंड देयरफॉर पीपल आर डाइंग आउट ऑफ नॉन डोनेशन ऑफ सच नंबर ऑफ ऑर्गन्स डायरेक्टली अवेलेबल फ्रीली इन दिस रेस्पेक्टिव एरियाज. ओके, तो ये बोला गया अबाउट आई डोनेशंस. नेक्स्ट, IAF, that is the Indian Air Force न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच. तो ये जो न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच है ये तो सुन ही चुके हो. ठीक है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी ने यहाँ पे ये मूव चला है विद एन एक्सचेकर एज मच एज 3,400 करोड़. तो ये सिग्निफिकेंस क्या है? सी, द वेपन सिस्टम ब्रांच विल बूस्ट द वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. पहला है. सेकंड क्या होता है? इट वुड आल्सो एनकम्पस ऑपरेटर्स इन 4 स्पेसिफिलाइज्ड स्ट्रीम्स of surface to surface missile, remotely piloted aircrafts, surface to air missile and weapon system operators. तो ये 4 जो स्पेशलाइज स्ट्रीम्स है, इन सब में ये वेपन ब्रांच बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. दैट इज व्हाट? सरफेस टू सरफेस, रिमोटली piloted aircraft, surface to air and weapon system operators. And the creation of this weapon system branch would also entail the unification of all weapon system operators under one entity. And it will be responsible for various weapon system in Indian Air Force, as a result in saving of rupees 3,400 crores. ठीक है, तो अभी ये जो
वेपन सिस्टम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वेपन्स with related equipment, services, materials, deployment necessary for self-sufficiency. Okay, and this is directly the fourth branch of the Indian Air Force. जो थ्री एग्जिस्टिंग ब्रांच है वो क्या क्या है? एक है टेक्निकल ब्रांच, एक है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और एक है फ्लाइंग ब्रांच. तो अभी ये फोर्थ ब्रांच में आ गया है, दैट इज द वेपन सिस्टम ब्रांच. तो एफकेट में कभी तुम लोग एग्जाम दोगे तो वहां पे पता चलेगा, सीडीएस का एग्जाम दोगे तो तब पता चलेगा. तो पहले हम लोग के टाइम में क्या था, अभी भी है, अभी तो ये अभी अभी लॉन्च हुआ है. तो हम लोग जब एफकेट दिए थे तब वहां पे था फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच एज वेल एज टेक्निकल ब्रांच. ये इंजीनियर्स के लिए होता है, ठीक है, ये ओपन टू ऑल होता है. देन वी कुड सी दैट दिस ब्रांचेस, ये फ्लाइंग ब्रांच जो है ये जनरली उड़ते हैं, ठीक है, पायलट्स हैं जो चलाते हैं, जेट्स को चलाते हैं, ये ग्राउंड स्टाफ होते हैं, ठीक है. देन दिस टेक्निकल ब्रांच आर बेसिकली द इंजीनियर्स हु इज डायरेक्टली फॉर द मेंटेनेंस एंड एवरी फॉर्म ऑफ वर्क दैट इज इन एसोसिएशन विद द एयरफोर्स. तो अभी यहाँ पे आ गया है वेपन सिस्टम ब्रांच, ठीक है. तो अभी ये एक नया लाइक कैटेगरी बनेंगे, नया एक स्ट्रीम बनेंगे which will directly serve and which will directly save Indian Air Force savings of around 3,400 crore. ठीक है, तो इसके लिए ये मेनली बनाया गया है टू मेक सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स वेरी मच ऑफ अलाइन. ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्टली द मेन ब्रांच which will boost the war fighting capability of the Indian Air Force. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आता है. लास्टली द एडिटोरियल, इंडिया नॉट टेकिंग अ हनुमान लीग. तो ये बेसिकली हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ पे थोड़ा हम लोग का इकोनॉमी के बारे में बोला है, ठीक है, कि राइट आफ्टर दिस पेंडेमिक हाउ इंडियन इकोनॉमी इज टोटली इन इट्स नीड्स. बिकॉज सी द रोलिंग लॉकडाउन्स ड्यू टू कोविड हैव सेंट द इकोनॉमी इनटू अ टेल स्पीड. ठीक है, एंड ग्रोइंग इन इंडिया एंड इंडीड मच ऑफ द वर्ल्ड इज सेट टू फॉल बाय सम ऑफ द लेटर पीरियड्स. तो ये एनालाइज किया गया था तब. सम ऑफ द इकोनॉमिक पंडित्स who seem to be going with such number of recovery, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ सजेस्ट किया था. मैंने बताया था अपना पिछला वीडियोस में अबाउट द यू शेप कर्व, वी शेप कर्व, डब्ल्यू शेप कर्व, जेड शेप कर्व, एल जे स्विस. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच डिस्कस्ड कि कैसे वी कुड डायरेक्टली सी अबाउट अ रिकवरी इन द इंडियन इकोनॉमी. ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू बी डन. तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि लाइक अभी धीरे धीरे करके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है, this private investments as well as the existing companies investments in some of the holes or in the capitals, so their capitals have drastically went down. So due to this drastical lesson down of this capital, we could see that there is some of the dysfunctionals in the economy. Okay, and there are concerns about sluggish corporate investment despite the government business friendly stance, including a reduction in the corporate tax. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कम आ रहा है प्राइवेट प्लेयर्स का. गवर्नमेंट तो चलो पब्लिक प्लेयर्स तो इतना इन्वेस्ट करते भी नहीं है, ठीक है, उनको और ज्यादा काम होता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं टुवर्ड्स द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स. तो फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग का प्राइवेट प्लेयर्स है, ये प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कुड सी दैट देयर इज अ स्लगिश ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. एंड दिस स्लगिश ग्रोथ इज वेरी मच नॉट लाइक की the sluggish growth is not very much going with the ratio of how the Indian economy should maintain its balance. So today, if you directly analyze about this situation that we can see today, there is a reduction rate from the existing companies of their respective investments. पहले 30% 2019 तक 30% यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट्स थे फॉर सम ऑफ द कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज. तो अभी ये घट के हो गया है 22%. यहाँ पे देख सकते हो ये घट के हो गया है 22%. ठीक है, पहले 30% था. फिर इवन यू कैन सी अबाउट द न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, it directly came from 15% from around 25%. Okay, so private investment accounts for around close to 75% of the total capacity formation. And therefore ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है इसका रिवाइवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं देन ऑब्वियसली द कंट्रीज इकोनॉमी विल टोटली स्लगट डाउन. बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर सोच लो कि वहां पे अगर हम लोग का इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 75% है ऑफ द टोटल कैपेसिटी फॉर्मुलेशन इन द इकोनॉमी, द रिवाइवल इज वेरी मच एसेंशियल फॉर सस्टेन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. And even we could see about the fiscally conservative internationally monetary fund has suggested that public investment can play the role of an engine of growth for the developing economies. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट दो इंपॉर्टेंट है लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है अबाउट एन इकोनॉमी टू गेट बैलेंस.
तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है कि हाउ व्हाट आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स which the government needs to find to maintain its current pace। क्योंकि आज हम लोग का जो इकोनॉमी है वो रिकवर्ड हो चुका है, जो निगेटिव ग्रोथ रेट थे वो हम लोग ने पॉजिटिव ट्रैक में मार्च कर चुके हैं, आज हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के दर्जे पे है। सो देयरफॉर यहाँ पे बोला गया है कि लाइक वन इज टू इम्पोर्टेंट टू चूज द राइट प्रोजेक्ट्स, कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए राइट है। Because a project which is very much of slowed, a project which is very much of sluggish, this cannot fit well with the economy। second क्या है, second बोला गया है कि about inflation, because inflation can derail a high public investment program due to disaffection in generates and it controls would requires a setup growth for agriculture produce other than superior credits। तो पहले secondly हम लोग को ध्यान रखना है about inflations कि कैसे हम लोग इन्फ्लेशन बचा सकते हैं, कैसे हम लोग को इन्फ्लेशन हम लोग वन नंबर पे, वन डिजिट नंबर पे हम लोग उसको रुका सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द गोल्स व्हिच आई हैव सेड एंड दिस कुड ओनली बी हैपनिंग when there will be increased balance of private investments instead of going in for public investments। तो इसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर कि इंडिया नॉट टेकिंग अ हनुमान लीप, इंडिया अभी भी उस दर्जे तक नहीं पहुंचा है टू टेक सम ऑफ द ग्रेटर लीप। ओके, बिकॉज हनुमान जी किसी को भी उठा देते थे। ओके, सो वी कैन सी अबाउट द माइटियरनेस ऑफ हनुमान। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि लाइक ओवर हियर वी नीड्स टू हैव the capital formation directly coming in from the private companies, because without such number of capital formation the country's progress will totally be halted and it will result in disharmony as well as various number of economical crises that the country may face in the coming times। तो यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे बोला गया है about the Indian economy by the respective writer। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव गॉट सम ऑफ द क्वेश्चंस, सो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। इसका एमसीक्यूज आपको कल वाले वीडियो के लास्ट पेज में मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो वी रेगुलरली अपडेट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस in our telegram channel, so do join our telegram channels from the description list, and okay, one main question is there. Also do join our WhatsApp group for our latest programs and updates। Okay, so that's all for today। Thank you and Jai Hind।